oral in nature. But over a period of time, especially after Industrial Revolution and arrival of printing press, they all have become written or typed down. कहानी सुनने और सुनाने की कला को जीवित रखने के लिए साहित्य अकादमी पिछले 4 दशकों से अलग अलग भाषाओं में कहानी पाठ कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। ये सत्र साहित्य प्रेमियों को विभिन्न भाषाओं में सीधे अपने प्रिय लेखकों के मुख से कहानी विश्वास पाटिल जी, जिनका मैं आपको परिचय देना चाहूंगी और विश्वास पाटिल जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया करके वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और ये ताली बजाने का बहुत ही अच्छा समय है। Vishwas Patil is an eminent novelist and playwright in Marathi literature and has retired as senior bureaucrat from Indian Administrative Services. He has written 13 novels on various issues concerning the masses and society. At 32, he received the Sahitya Akademi Award and was the youngest body for his novel Jhada Jhanti. He has also received the Indira Goswami National Award and the Priyadarshini National Award for Literature. We are grateful to you, sir, that you are chairing this session today. अब मैं हम बजा सकती हूँ और अब मैं बाकी कहानीकारों से आपका परिचय करवाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं न्योता देना चाहूंगी आकांक्षा पारे काशेर को। आप हिंदी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार हैं। आपका एक काव्य संग्रह और एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित है। इसके अलावा कई प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में भी आपके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। आप आउटलुक पत्रिका में सहायक संपादक के तौर पर कार्यरत हैं। आप रमाकांत कथा स्मृति पुरस्कार, त्रिवेणी सम्मान और राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान से पुरस्कृत है। मैम, आपका हृदय से स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगी, देखिए प्रॉपर नाम होते हैं जो हमारे नाम होते हैं और मैं उत्तर भारत से हूँ। अगर किसी नाम का गलत उच्चारण करूँ तो माफ कर दीजिएगा, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बेनियामिन जी को I hope I pronounced the name correctly. He is the author of 25 books in various genres, from short stories to novels to memoirs. His novel Adu Jeevitam earned him the Kerala Sahitya Akademi Award. It is translated into many other languages. इसके अलावा मौत की पीली रोशनी, अल अरेबियन नॉवल फैक्ट्री, ब्लड एंड बॉडी, पोस्टमैन और साइलेंट जर्नी आपकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। आप वायलर पुरस्कार, पद्म प्रभा पुरस्कार और क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगी मौमिता को। मौमिता हमारे बीच है। यस, आप एक बांग्ला कहानीकार, स्तंभकार और उपन्यासकार हैं। पेशे से आप एक चिकित्सक हैं। आपके 6 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आपका प्रथम उपन्यास कुत्तक फायर असे के लिए आप साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं। She is a regular columnist in leading magazines and newspapers of West Bengal. Her new novel, Network, is currently being serialized in a daily newspaper, Pratidin. Very warm welcome. ममता ने सबकी किताबें बजाई थी। अब मैं बुलाना चाहूंगी पवन चौहान जी को। पवन जी, आपकी रचनाएं केरल के कोट्टयम स्थित एमजी विश्वविद्यालय नागपुर के तुकाडोजी महाराज विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश के महाराष्ट्र के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हैं। He is the guest editor of children's magazine Divyata and web magazine Hastakshar and the Sunday magazine edition of Umang of Rashtriya Sahara. He has won recognition for his poem Favorite Appeal and for children's literature. Sir, आपका हृदय से स्वागत है। अब मैं न्योता देती हूँ राहुल सैनी जी को। राहुल जी हमारे बीच हैं। राहुल जी, मैं
उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, और जब वो आ जाएंगे तो we'll have him on stage. आपकी प्रकाशित रचनाओं में से अधिकतर बेस्ट सेलर रही हैं। आपके उपन्यास पर बैंक ड्रीम्स के लिए आपको वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य के लिए A3 of Author पुरस्कार प्राप्त हुआ है। His latest book, The Part I Left With You, is being received well. He also runs a YouTube channel called Writing Rahul, where he talks about books, music, movies, and TV shows. और हमारे आज के इस सत्र के आखिरी कथाकार ऋषिराज जी हैं हमारे बीच। तो चलिए, अगर ऋषिराज जी आते हैं तब मैं उनका परिचय देकर उन्हें हम मंच पर बुलाऊंगी। अभी जितने कहानीकार हमारे बीच मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, हम उनका मंच पर अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं न्योता दूंगी देवेंद्र कुमार देवेश जी को कि साहित्य अकादमी की तरफ से आए और आप सभी को आंग वस्त्र प्रदान करके आपका अभिनंदन करें। Thank you, sir. अब यहाँ से I would like to request our honorable chair to take the session forward. इस सत्र की अवधि है 90 मिनट और हम इसे 6 बजे तक समेटना चाहेंगे। हमारे पास मैं अपनी टीम से आगे करूँगी, इस तरह यहाँ पर माइक्स रखते हैं, हमारे पास कॉर्डलेस माइक्स यहाँ रहेंगे, अन्यथा अगर आपको जिन पर आकर बात करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। Friends, I welcome everybody in this session. The short story and its history and lineage, we all are aware about it. And many times it happens in life of writer or in his work also, some good or bad incidents. I recall 25 years back, I was working in City, Mumbai as managing director. During those days, telephones were there, but mobile was not there. And the shooting of one TV serial, Chandrakanta, was going on. And famous writer Kamleshwarji was writing it, and he used to come every day for making a phone call in my chamber, and he was taking tea also. But unfortunately, I was not gone through his any work until that time. But when I read Kitne Pakistan, from that moment, for last 12 years, I am repenting कि मैंने उनसे बातें क्यों नहीं की। ऐसी बातें कथाकारों के लाइफ में भी होती है और उनके वर्क में भी होती है। उसने कहा था करके एक पुरानी कथा है गुलेरी जी की। कितने कथा सागर है हमारे इंडियन लिटरेचर में, मारे गए गुलफाम, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। और जब मैंने लाजवंती पढ़ी डॉक्टर राजेंद्र सिंह बेदी, it was about the partition and tussle between India and Pakistan. When I went through it, I was shocked, I was restless, and I could not forget that story for last 30 years.
Then I came across Krishna Chandra, Premchandra. He is not Kathakar, but he is a Katha Sagar. वो सागर जितना गहरा है, उसी गहरी प्रेमचंद्र जी की कथा है. We have read many good stories like महाश्वेता देवी's नमक, salt, मंटो की कहानियां. हमारे एक बड़े कथाकार यहाँ बैठे हैं, गौरीहरा दास, उनकी बप्पा नाम की कथा हमने पढ़ी थी. तो सालों से कथा, this short story and Indian story, it may be Panchakatha, it may be folklore or anything, it is being told and retold. And here, after going through the names of all these dignitaries, we are aware that short story writers of present, from Malabar to Kashmir, everybody is available here. They are going to tell their stories. They may tell in Hindi or in English, but I request that everybody has only 10 minutes time. If some writers have already come with the more shorter story, then also welcome. But our scheduled time is 10 minutes only, and I am eager to listen to them. Here, like every one of you, because I'm going to watch today's India through their writings. Thanks. तकनीक के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान फिजिकली आपके साथ रहे. तो राहुल सैनी जी यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रहे हैं, वो ऑनलाइन हमारे साथ अवेलेबल है. अध्यक्ष महोदय, जब आप कथाकार को बुलाना शुरू करें तो राहुल सैनी जी को भी आप जरूर आवाज़ दीजिएगा, वो ऑनलाइन से. I think Mr. Rishiraj is not there. So, Rahul Saini. Okay. Okay. उसके पहले. Then Pawan Chauhan. Yes. शुक्रिया साहित्य अकादमी. अध्यक्ष महोदय, मेरी कहानी हिमाचल की मंड्याली जो बोली है उसमें है. कहानी में मंड्याली तो है, मंड्याली हमारी पंजाबी, हिंदी और जो यहाँ के लोकल शब्द हैं उनसे मिलकर बनी है. तो मुझे लगता है कि मुझे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी. तो मेरी कहानी का शीर्षक है फिंगरप्रिंट्स. आज भी कन्ने दादी सरकारी राशनारी डिपो आई थी. दादी अरे फिंगरप्रिंट्स राशनावली मशीना कने मैच नहीं हुए कर रहे थे. डिपो वाला दादिया जो बार-बार हाथ धोने जो बोले करा, सौगी फिंगरप्रिंट्स अपडेट नहीं करने इकट्ठे भी पक्या करा. अपडेट इकट्ठे दादिया जो 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था, पर इस उम्र में दादी इतने दूर नहीं जा सकती थी. दादियों के सिरा सौंप चाहिए थी. इन्हें भी इना पहाड़ी इलाका लासे दादिया जो बड़ा भारी डर लगा था. सदारिनी पत्ते बेले जब दादू इस लहासे की माटिया में दबी गया था. और भी लोग दबे थे, पर दादू की लाश 5 दिन बाद मिली थी. इन्हें दुखे दादिया जो जिस कदर तोड़िया सिर दादी है जान सकाई थी. सासे सोरे ऐसा कुदरती घटना रा जिम्मेदार भी दादिया जो ठहराया और मनुष्य तगमा देवा आपने घराने बाहर निकाली दिया. गोयनी ने सौकिया वाले कमरे दित्या से जे डांगरे रखा
कने जलाने की लकड़ी और गोई टू रखने का स्टोर था। सास सौरे जो तीना जो मासूमा पर भी तरस नहीं आया। से कितना बुरा ध्याड़ा था दादी रे बैठे। दादू रे जाने के बाद एकदम सब कुछ बदली गया था। ये ते सारा कठे सोचे भी बाहर था। जिया तिया तेस ध्याड़े बरखा में सौगिरे बनाने लकड़ी ले आंदी थी। तेस ध्याड़े बरखा अरे इस पानी में जा से भी अपना हिस्सा जोड़ती लगी थी। हाखिया रोई रोई करे सोची गिरी थी। ते सारे समझा नहीं आया करता था मेरी क्या गलती रही होंगी। ये ते सारे टूटने और जुड़ने का सिलसिला था। से ऐसा बड़ा मंच जाने ले सदा डराई थी। दादू ने कई बार ऐसा जो साकी चलने रखे भी बोलिया पर से कभी नहीं गई। से बना रखा था जो भली बातें जाने थी। जेबे से हल्की थी ता आमा भैया साकी बना रहे घास और लकड़ी लेने कठे गई थी। ततेस ध्याड़े ते सारे भैया जो बागे जिस तरीके के दबोचा था तसे घटना आज भी ते सारे दिमागा पर तेड़ी ताजे बागे भैया रे जंगा भैया सौगी मुंह एक हिस्से रे मासा जो पूरी तरह से नोच दिया था। जब पीछे आने वाली गांव वाली टोली नहीं होती तब भाई जिंदा नहीं बचता। से बच्ची का गया पर आज से एक अपाई जैसा ही जिंदा लग रहा पर लाचार और मजबूर भी गए। पर आज से बड़ा जाने लेनी डरी जैसा जो छोटे मठे भागले भूखे बैठ रहे थे। आज जैसा कठे बागा ले बड़ा खतरा दूजा था। बागा बड़ा वापस आई के दिन गांव वाले थोड़ा बहुत आटे चावल का जुगाड़ किया। पत्थरा जोड़ी के चूल्हा बनाया और टुकुर टुकुर माहौल आजू बाजू देखने वाले बच्चे ने मुंह तक गला पहुंचाया। दोनों बच्चे जो तेज ध्यान इतना तो समझ आई गिरा था कि इन्हें दादू दादी इतना सौगी बुरा बुरा किया था। स्यों चाहुआ भी कुछ नहीं कर सके थे। कुछ साल पहले ताती ने ढंगा ने चलना सीखा था। तिनारा विरोध किसी भी काम आने वाला नहीं था। दादी ने सास सौर्य जो ताउमर सौगी रहना था ये पहले ही सोच ही लिया था। तिने दोनों बच्चे जो दादी केड़ी केड़ी मुश्किल में पाया बड़ा किया और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। ये दादी री हिम्मत थी। दादी रे प्यो के पहले ते अपाइज भाई था से इतना हालाता पर मजबूर था। दादी रे गरीब माँ बाप भाई रे ख्याल रखी पाओ दादी कठे ये बड़ा बड़ा था। दादी बड़ा टाइम तक अपने माँ बाप ने अपनी ऐसा हालत री कोई भी गल नहीं की। अहिया भी क्या हुंदा जैसे करीबी लेंदी था। सेती ना जो और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। ये बुरा टाइम दादी शुरू में जाता रोई रोई के कटिया। कई दुख परेशानियां हटी हटी के जब दादी जो परेशान करती लगी था। एक दिन दादी इधर छुटकारा पाना चाहा। तेस राती खाने में चूहे मारने की सारी गोलियां मिलाई थी पर तेसा घड़ी ना जाने कोने एक ताकत कदम चली कि दादी जो रोकी था। फिर ऐसा घटना के बाद दादी कभी भी नहीं रोई। हालात कने लड़दे और हर परिस्थितियों में मेहनत मजदूरी सिलाई आदि करवा अपने दूजे बच्चे दो बच्चे हर मुरादा जो पूरी करने की कोशिश करती रही। चाहे कई बार रोना सौगी रोटी की नहीं खाती। अनपढ़ दादी डिपोरे बाहर एक छोटे जे पत्थर पर बैठी कने अपनी उंगलियां रे कोरा जो मलदे मलदे सोचती रही। जे अपने डारे कठे हम चली भी गई तब मुझे इस प्रक्रिया का पता ही नहीं लगना है। हम कमरा भटकती रहेंगी फिर भी ना जाने कितना टाइम लगी जाना। फिर घर भी ना आना चादर की गाठी में इतने भी डब्बे नहीं है कि से घर वापस किसी गड्डी करवा आ सको। पैदल हांडना तो आफत हुई होनी। गांव जाने वाली लास्ट बस भी 3 बजे निकली है। क्या पता तेरे तक ते सारा काम होगा भी कि नहीं। बुढ़ापे री पेंशनर आधा हिस्सा था बड़ा मठे ले लिया था। से जे थोड़ा मते बचा भी थे तसे तेसरे राशन रे इकट्ठे मांगी लिया था। डाकिया जो पेंशन दे के गया नहीं कि दादी ने कुछ ही मिनट में दादी खाली हुई जाती थी। फिर कभी कदाई दवाई इकट्ठे भी दादी जो मंगते ऐसा ही हाथ फैलाना पड़ा था। ये तारी भी कोई गारंटी नहीं थी कि यो मिल गए भी कि नहीं। इधर इकट्ठे दादी बार बार हाथ धोई कने या फिर कुठिया पूरा जो मली कने फिंगरप्रिंट मिलाने की कोशिश करे थी। सोचा करें थी शायद इस बारे में सदा से कोई तुक्का लगी जाओ पर ये सब बेकार था। दादी ने फिंगरप्रिंट्स मशीन कने मिले नहीं कर रहे थे। दादी आज हैरान और परेशान थी।
डिपुले साउगी सरकारी स्कूल में दादी ने छोटे मठेरा बेटा अभिनव दूसरी क्लास अंदर पढ़ा था। दादी तेज जो प्यार करने अबू बोल रही थी। अभिनव के माँ बाबा अभिनव के माँ बाबा बाप दादी सौगी नहीं रहते थे। दादी जो ताऊ आपू सौगी रखा था। दादी पूरे झाड़े घरारा वो डंगरे सारा काम कर रही थी। हर एक मौसम में दादी ने हाथ पैर कटीले रहे थे। ताऊ लग राशन कार्ड बनाई देता था ताकि धक ज्यादा राशन मिल जाओ। पहले तो ताऊ आपू ये राशन ले आवा था पर जेबे ये फिंगरप्रिंट सा जो री मशीन आई मशीना कने मलाने राशन जो तरीका सरकार ने चलाया तो दादी जो ना चाहते वो भी जाना पड़ा था। नहीं जानता तो ताऊ ताई ने छिड़का मिलाई थी। दादी ने कट्ठी ये मशीन मुसीबत थी। एक ता इस उम्र में पूरा बुढ़ापा आई गिरा था ऊपराले गोटे री पीड़। दादी सदा ही फिक्रा में जलाई थी। मध्या जो डॉक्टर वाले ले जाना कभी भी टाइम नहीं मिला। दादी एक इसरा एक चलता फिरता उपाय टोले लेना था। से एक देसी दवाई जमाई थी जो बैंडेज होगी झाड़ियों में जमाई थी। दवाई इकट्ठे डब्बे नहीं होने की बजाय दादी यारी माओ भी इतने सारे भाई जो ये दवाई लगाई थी। कितने साल बीती गए पर दीदी के ही काम चली रहा था। जेबे पीड़ लगाई थी तो दादी की नापात्रा जो जुबुआ कने चादरी सौगी गोडे कने बांधी दी थी। दीदी कने दादी पीड़ा जो थोड़ा जब तक जे आराम ता जरूर मिला था पर यो पूरे ये तरीका इस पूरी दर्द जो खत्म नहीं कर सका था। जेबे दादी ने फिंगरप्रिंट्स मशीना के नहीं मिलते थे तो दादी जो हड्डी हड्डी कने ते मशीना पर ट्रायल करके साधा जा था। जे फेरी भी ना मिलते तड़ी पोला दादी जो हाथ धोने या कुछ ने पोरा जो मलने इकट्ठे बार-बार बोला था। ये सिलसिला कई बार दोहराया जा था। फेरी जो चाणक मिली भी गए ताकि ना मिले ता दूसरे घड़े साधा थे। ये प्रक्रिया दादी जो थकाई गई थी ये पूरी सौगी भी हुआ था पर किनारे एक दुई कोशिश वाले बाद मिल जाए थे। सारे में दादी रह जाए थी। सभी से ज्यादा ट्रायल दादी ने चलाए थे। कई बार था क्या कर लेकिन संजय तक दादी बड़े मठे जो कई बार बोले थी कि जो फिंगरप्रिंट्स अपने कराने इकट्ठे ले जाओ पर से हर बारी एड़ा बोलना था जी टाइम मिल गया हम ले जाऊंगा पर से टाइम कभी भी नहीं आया। आज भी राशन लेने इकट्ठे दादी जो कल ले आना पड़ रहा था क्योंकि पिछले दिहाड़े भी दादी ने फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। घरावाले अपना राशन कार्ड राशन तो ले गए थे पर दादी जो पता नहीं कितनी बार खज्जल होना पाया था। बहुए और बेटे दादी जो हमेशा साई खूब आखिया दसी थी। 5 महीने पहले जब दादी बीमार हुई होने की बजाय अपना राशन कार्ड नहीं ले सकी थी तब 3 घंटे तक बाई खाना पाया था। से भी जाने बुझी कने खूब देर के बाद तेबे दादी रिस्क दी गया से राशन लेने आई जाई थी चाहे ते सारा केड़े भी हालात की ना हो। ये मशीन उम्र थोड़ा जी भी लिहाज नहीं कर दी मुझे सदा परेशान करे पता नहीं क्या दुश्मनी है सारी मेरे कने। दादी ये कई बार बुड़बुड़ाई थी। अभी नवा जो स्कूल वाले छुट्टी हुई गिर थी तिने दादी जो जब डिपुले बाहर दो उदास देखा तो दौड़ी के दादी के पहले आई गया से दादी जो बड़ा प्यार कर रहा था। ताऊ और ते सारा घर एक आंगन था जेबे भी दादी दुआ हुई थी तसे दादी वाले पहुंची आ था। अभिनव अपने बापू जो कई बार बोली बैठा था कि दादी जो अपने घर लिया हुए पर ताऊ और देश के बापू ने मुझे ना जाने क्या समझौता हो रहा था से देश जो आज तक समझ नहीं आया। दादी चला घर चले अभिनव बोलिया बेटा हली नहीं हो जाई सकती हली मशीनरी गुठिया मलाना पड़ी ते पे राशन मिलना और ते पे ऑर्डर हो जाई सके ता दादी गुठिया जो मलावा था फिर आसे सौ की घर चल गई। दादी जब सारी गल पोतली जो सुनाई तती ने दादी रा हाथ देखी के बड़ी मासूमियता के बोलिया ओ दादी तय हाथ ता धोई रे नहीं देखा मैं लगने कितनी लाइना पई गिरी ना मैच कि ना मैच होने तो सारी गुठिया मशीन ना करे जावा पहले तो से हाथ धोई के आवा से भी साबरा कने रगड़ी कने आसू स्कूला दस रहे सही करना कने हाथ धोना देखा तो सारे हाथ भी बिल्कुल साफ हुई जाने मेरे सही हां तो सो दसूं फिर फिंगरप्रिंट्स भी मिली जाने हां के कीजिए ता लगी रही है कर दी दादी दास वीक ने बोलाई दादी मैं लगी रास साबणाते जानी गुठिया मलने ने थोड़ी नहीं हां अपने हाथ रोज धोआ दिहाड़ियां कई बार धोआ देख मेरे हाथ कितने गोरे और साफ है
तू सर्वी एरे हुई जाने पोतरू रे भोलेपना जो देखो दादी तेस जो प्यारा करने गले लगाई दित्या से जाना ही थी जिਉਂਦੇ रहने इकट्ठे इना फिंगरप्रिंट्स आ जो संभालना है पौना ये सारी वो फिंगरप्रिंट्स आपने दोवा मठिया जो प्यारा करने संभालते पौंदे उठते बैठते जख्मा जो सहलांदे इन्हरे दुखा परेशानियां जो बांटते और इन्हरी इच्छा जो पूरा करते करते ना जाने कितनी प्रिंट हुए थे इन्हरी कोई भी गिनती नहीं कर सकता था चाहो भी ताबिनी से टाइम एक मामला था जिसमें एरे किसी सबक दावारी कोई भी जगह नहीं थी पोतरू रे कोमल हाथा जो अपने हाथा में लेंदे दादी अपने सांवले और फटीले छुरी वाले हाथा री कुठिया रे पूरा में फिंगरप्रिंट्स निकलते हुए महसूस करया करे थे थैंक यू Now, Momita. I take this opportunity to thank the Ministry of Culture and Sahitya Academy for inviting me to this prestigious event. Now I will be reading out a story written by me that has been summarized because allotted time is very short or limited actually. The name of the story, In Search of the Best Lover. The letter was quite surprising to me. Even after going through it for a couple of times, the issue was not clear to me. Jagrata is a very well-known NGO for women. Especially those who are struggling, their activities are really admirable. Acid victims, girls, women suffering from marriage issues get Jagrata by their side for all forms of assistance, from legal help to getting a job. Surprisingly, this Jagrata, in collaboration with the Ladies magazine, has organized an event named In Search of the Best Lover. I felt surprised as to why such a serious organization like Jagrata was doing such a job. But the more surprising fact to me was that the committee had selected me as one of the members of the jury. It is true that I write sometimes for women and offer free treatment to helpless ladies. But is that enough reason for doing a job of selection of lover for ladies? As a lady love, I always got cheated. So it was really out of my knowledge why such a failed lover should be in such a list. In my childhood, I earned some money searching lies in one of my grandmother's head. After this, there was no improvement in my searching skill. When I found I was supposed to get 50,000 rupees for this event, I felt excited. 50,000 for selecting a lover. They have given a list of a few names already. Besides this, they have informed me that if I have any name in my mind fit for this contest, I would let them know with details. My tea got cold while imagining about a perfect lover through my unsuccessful love lives. Arranging for another cup of tea, I started turning over the page again. The first one is a cricketer, played very little from the country, but played for long in Ranji Trophy. He has some works even in cinema. As far as it is known, he married 4 times and he attracts more limelight for his love affairs than his cricket life. The second one is a politician who is also more famous for his love affairs than his political career. He wears dresses matching the color with the dresses worn by his lady loves. The third name is
is of a singer who transformed himself from boy to girl and again went back to pavilion. And all that was for the sake of love. And now, as he is a man at present, he could get enlisted. The fourth name is of a player who kicked same-side goal to please his lady love. Consequently, he took a great role in his team's defeat. Then his fan followers chased to beat him and he had to hide himself for the next 6 months. Later, he got a chance in other teams and played for them. But his credit was that same-side goal to please his beloved. Now one of these four would be the best lover or any other whose name would be sent by other members of the jury. To maintain transparency, they have kept a rule. The selectors won't be able to know each other before the final day. On the final day, we would face each other. And that day, on behalf of Jagrata, the selectors would select the best lover. Now the problem was, on my behalf, whom should I suggest? Do I deserve to say anything, being already a failure in this case? Thinking and thinking over it, my eyes were heavy and I had a dream of different flowers. Many bougainvillea, dopati, sunflower, rose, etc. in the context of flowers. The name of Gopallal Bera came to my mind. In relation with creative writing, I came to know about him. He used to compose poems, but his main hobby was with flowers. He was a jailer. He called writers to the jail to read out their work. He called me a couple of times. He was in the ladies' jails in most of his service life. He once invited me to speak on Women's Day. I was impressed by the arrangements. The anchor was a criminal of defalcation case. She announced in English. Saw another lady whom I had seen recently in newspaper as a criminal accused of murdering her husband in partnership with her lover. Their method of speaking was not like convicts. In men's jail, roughness and arrogance rule. But in women's jail, things are softer. I had a feeling that I was visiting a ladies' hostel. We cannot identify them just as criminals, Gopalda said. Being surprised, I looked at the Gopalda. What did he say? Yes, they are human beings, I said. Then Gopalda said, no, I didn't say in the sense that they all are human beings. I engage all the convicts who come and stay here in the job of a gardener. Perhaps they have come here after killing people, doing some misdeeds. But those negative parts evaporates from my mind. That girl whom you saw, that Shuchandra, she helped to blossom such splendid rose that was never seen before in the jail. Now she will make the white rose bloom. Mitra and Apsara have cultivated such beautiful sunflowers. I will show you. See, see Soma, she has made the balsam bloom. The tiger tree was dying. Radhika gave it to life. Now it's blooming. I was staring at Gopalda. Gopalda said, I can't identify them with any of their crimes anymore. Each girl gets attached to a particular flower when she is in jail. Whenever I utter or hear any of their names, I remember the flowers associated with their names. One flower to one girl, sometimes to more flowers. They all are flowers to me. I cannot predict what is stored in future. But now I can't think of them as convicts. I can't see them as wrongdoers. They are blooming flowers. Can't we do the same in life too? Do what? I asked. Those whom we think to be very evil, or those who have hurt or injured us emotionally, if we forget those thorny experiences with them and just remember the flower bloomed by him or her in our lives,
Is it really impossible? Gopalda has written a couple of poems which I didn't read with attention. None did show, but words of Gopalda stirred our hearts. In that half-dark jail, I exclaimed, Gopalda, can we go again to the garden? Taking off my shoes, I started walking on the grass, touched the flowers one by one. Each flower was a girl. Some had their school life, college life, acquaintances with a first lover, laughter, then a storm from there, a cyclone, attachment with a crime. But after all, these flowers are flowers themselves. I was trying to follow Gopalda's words. I was trying to inhale fragments of the flowers, touched all the flowers. Gopalda asked me not to touch flowers in the evening. I could notice some conflicts in the distance. An evening was coming down between us. An evening that cannot be touched. Dreamy. Carrying the dream in my mind, I returned home. Waking up from the nap again, I looked at the letter of Jagrata. Once again, I tried to connect him over the phone. At first, my call didn't connect. On the next try, I got someone on the other end, shared my name. I told him about the letter. Tell me, do you have any reference? Yes, I shall mail you. You can tell me now, I can take down. I paused for a minute, then said, Gopallal Bera. Perhaps the person who was on the other side did not expect such a name. He said, please repeat. I repeated the name. Note down Gopallal Bera, age 59, occupation jailer. Jailer? Yes, jailer at a ladies' jail. To be sure, he told me the name and wanted to confirm. But I was not doing any mistake. Once again, I gave him the name and phone number. After they had noted down, I disconnected the call. Closing my eyes now, I tried to see something. Not the face of the 59 years old man, not the face of any girl, not the face of any angel, not even the scene of the garden. What I felt was just fragments blooming in the darkness, fragments of lots and lots of flowers. When they all mingle, the whole human being can be transformed into redolence and fragrance. Thank you. Very nice, Momita. It is in originally Bangla. Okay. So we can have reference of original languages in translation also. We found in both the storytellers and story writers. Now we are requesting to Mr. Rahul Saini. We'll wait for a few minutes. Okay. He is coming to meet us. Hello. Hello. Just give me a second. Yes. Mr. Saini. Sir, can you hear me? Am I audible? Listen to me. Yeah, I can hear you. I've been listening to the stories and I've been watching the session. Okay. You are comfortable now? Yes, I'm good. Yeah. You have time limit of 10 minutes only. Please have your story. Yes.
Where are you stationed now? Sorry, I didn't get that. Where are you stationed now? Right now I am in Jalandhar. Dehradun. Okay. Jalandhar. Okay. Yes, that's right. Please have your story. Okay, all right. I shall begin then. Hi everyone. First of all, a big thank you to Sahitya Academy for giving me this wonderful platform to share my story. I know the time limit is 10 minutes. I am gonna try make it even shorter. I'm terrible when it comes to reading out loud anything that's written, and I get really nervous when I'm addressing events and audience. So if I fumble, if I mess up, please don't kill me for that. Okay, so the story that I'm going to read out today is basically an episode from a novel that I wrote, which is called A Part I Left With You. I'm going to talk about the kind of thoughts one of the characters goes through in this story. The character's name is Natasha. She's going through what one might call a midlife crisis. There's a change in her life that's happening, and she is trying to move on, but she's finding it very difficult to cope up with things. And this is just one of those incidents that happens with her. So I'll just start reading the story now. The title goes, Natasha, Who Am I? Natasha turns the key, twists the doorknob, and pushes the door open. Never before had she thought so much about the simple act of opening a door. She was in a strange state of mind today. Somehow her perception of time felt completely stretched. What a miracle it was! Humans opening doors. It begins with the will to open a door. Your neurons receiving orders from your brain, and the complicated machinery of bones and muscles in your arm responding to it. She pushes the door, enters her apartment, and jumps. Someone is sitting on a chair in the living room. What? How is this possible? Should she run out and call the cops? Who is it? She takes a moment and realizes that whosoever is sitting on that chair resembles her. Before she could ask, "Who are you? How did you get inside?" the figure on the chair speaks. Don't be shocked. It's just me. I am the part of yourself that you leave behind when you are gone. That does not make any sense to Natasha. She doesn't even know what's going on. I am the scent that remains when you leave. I am the spirit that stays after you are gone. I am the part of you that will die only with the death of all the people who know you. After a short pause, the figure continues. And as ironic as it is, I am all the people you have ever known. For you are all the people whom you have ever known. The world around you, the people, they make you. And that's what I am. And that's what you are. Natasha stares back at the figure, unsure what to feel. As she stands there trying to comprehend what is happening, the figure on the chair starts shimmering. It flickers and jumps from one form to another. One instant it resembles her, another her ex-boyfriend, then her current boyfriend, then her mother, her brother, her childhood friend, her dog who passed away 2 years back, her father. And then she turns back into her own self. Why are you here? Natasha asks. She doesn't even know why she's asking this question. One answer to this question is, I am here because you left me here. Another answer is, I am here because you have been trying to look at yourself, wanting to know what's going on in your mind. Why are you doing all the things that you are doing? Okay, so tell me, why am I doing all the things I'm doing? I can't tell you anything. I'm your shadow. You can only look at me to see your own self. I can't tell you anything the way you want me to. And just then, the figure turned into her physics teacher from school. No more spoon feeding for you, young lady. You are a grown-up woman now.
Learn to find out things on your own. You will soon finish school and go to college. No one's going to spoon feed you then. You will fail and they'll kick you out if you don't learn how to do things on your own. And you will learn to figure out things. You will learn to figure out everything. You just have to keep at it. A voice echoed in Natasha's head. You are someone from my past, Natasha frowned. I am neither someone else, nor am I someone from your past. I am you. Your past, your present, your future, all of that. It's all you. It's all one. All the people that have come into your life, all the people that you have loved or hated or even been indifferent to you, they are all a part of you. You can't turn away from your past, your present, or your future. These are the things you always have to face. Attempt running away from them and you will only end up tearing yourself apart. Your past and everyone you have ever met is what you are made of. Accept that. Try to erase any of that and you will only end up erasing your own self. Natasha hears a phone beeping. The figure on the chair pulls out a phone from its pocket and says, I gotta go. The figure begins to fade and disappears completely in a while, but the beeping continues. Natasha forces her eyes to open and fumble for the phone. It's the morning alarm she had set. It's her own phone beeping. It was all a dream. It had to be. Then there's a time jump, and it's Natasha goes out to work, and then she has a long day, and then she comes back. And that's when we go. She came back from the office in the evening and pushed the door open to the apartment. She did not want to count the number of months it had been since she had moved in here, but she knew it had been almost a year. Still so many boxes lying around, unpacked. Was the sight of them making her guilty for not opening them? Or was she regretting bringing them with her in the first place? She had finished her dinner more than half an hour ago, had done the dishes too, but still was not sleepy. She picked up her phone and checked the time, 10:37 p.m. She opened the messenger app on her phone, found some of her friends online, typed hi, but kept the phone aside. She was in no mood for chit chat. She looked at the piles of boxes again. Was she someone who hoards articles, things that are useless? Not really. What was in the boxes then? Things that she possessed and had not needed for over a year. A total of 5 boxes stacked neatly in 2 piles, one taller than the other. She picks up one of the boxes. It was full of just things. What would you call them? Memorabilia? Things she had bought with her ex-boyfriend, picture prints, prints of famous paintings, some of her favorite Monas and Picassos, salt shakers, mugs, stuff like that. Things that had decorated her flat where she lived with the man she thought she loved. Things that had now become painful memories. Why did she bring all this with her? Why did she not leave them behind at his place? Because she knew all these things would remind me of her. She knew they would make him miserable. She sat there frozen, staring at the contents of the box. One by one, she picked up the objects in the box and placed them on the floor, pausing frequently, taking all the time she wanted to look at them. Each piece had been carefully selected and scrutinized at the shops they had been bought from. She held up a fridge magnet that they had bought together in Goa. That shop, it was a fridge magnet heaven. Thousands of fridge magnets displayed all over the walls. It was so hard to make a decision to pick up one, but they had been successful in narrowing down their choice to 2 pieces. He wanted a palm tree forming an X across, and she wanted to have one with only a golden sunset. It was such a fun day. What did they do that day? Shop, move around, ate,
looked at each other, smiled, held hands. She smiled looking at the fridge magnet with the sunset, the golden sunset. She put it down on the floor. Each of the objects seemed to have a little soul, and each of these tiny souls seemed to get liberated and floated away as soon as she placed the objects on the floor. The objects were free now to do what they had always wanted to do. Thank you. Thank you very much, Ram. Thank you, sir. Now, I request Akanksha Pari Kashi for a reading. सभी को मेरा नमस्कार। रात को रिपोर्टर और लालटीन की छत पढ़ते हुए कभी सोचा नहीं था कि निर्मल वर्मा जी की धरती पर आकर मुझे कभी कहानी पढ़ने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि सीखा और उनकी धरती पर अगर आप पढ़ें तो एक अलग सा आपको थ्रिल महसूस हो रहा है, वैसा मैं महसूस कर रही हूँ। और ये मौका देने के लिए साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय का धन्यवाद। और दूसरी जो एक अलग तरह की धड़कनें पड़ी हुई है कि मनीषा जी सामने बैठी है तो लगता है कि आप पता नहीं पास कर पाएंगे कि नहीं, उठे होंगे कि नहीं। मैं अपनी कहानी पढ़ रही हूँ, छोटी सी कहानी, उसका शीर्षक है आगरा, मन्नत और साहस। बचपन में दादी एक कहानी सुनाया करती थी। गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो इतना दीनहीन और सीधा था कि उसे कोई भी फुसला सकता था। इतना सीधा कि वह हमेशा लोगों से पूछकर उनकी सलाह पर ही फैसला करता था। चार लोग जो कह देते वही बात मान लेता, कभी खुद का दिमाग न लगाता। लकड़हारे की पत्नी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। कई बार तो वो उसे झिड़क देती, समझाती, नाराज होती, पर करे तो क्या? अपने स्वभाव को बदले तो बदले कैसे? लकड़हारे की पत्नी कई बार उसे समझाकर, फुसलाकर अपनी बात मनवा लेती थी। एक बार लकड़हारा लकड़ियां काटने गया। वो लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ा और गिर गया। उसे बहुत चोट लगी, लेकिन जंगल में वो अकेला था। आसपास कोई नहीं जिससे वो मदद मांगता। बड़ी मुश्किल से वह घर लौटा। पड़ोसियों ने पत्नी को बताया कि लकड़हारा आज पेड़ से गिर गया है, उसे बहुत चोट आई है। पड़ोसी तुरंत मिजाज कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए। लकड़हारे को वाकई बहुत दर्द था। एक ने पूछा, भाई कहाँ लगी? लकड़हारा कुछ जवाब देता उसके पहले ही दूसरे ने सवाल जड़ा, पैर टूट गया क्या? लकड़हारे ने उसकी तरफ देखा, तभी तीसरा बोल उठा, मुझे तो लगता है कि कमर में लगी है, तभी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। इतनी भीड़ और सवाल, लकड़हारा इतना घबराया कि बस इतना ही वहां बोला, जहां चार लोग बोल दें वही मान लूंगा कि चोट कहाँ लगी है। यह सुनकर बीवी एकदम खफा हो गई, लेकिन दो लोग अड़ गए कि नहीं, इसका पैर टूटा है। जबकि दो और आगे आए और उसकी कोहनी की चोट पर शर्ट लगाने लगे। इसके बाद बहस छिड़ गई और धीरे धीरे लड़ाई में तब्दील हो गई। फिर लकड़हारे की पत्नी ने कमान हाथ में ली और तय किया कि लकड़हारे को कमर में नहीं, घुटने और सिर में लगी है। इसके बाद जो भी पूछता, लकड़हारा उसे यही बताता, लेकिन अकेले में अपने कंधे की मालिश कर देता था। उसके बाद हमेशा के लिए पत्नी ने कमान संभाली और लकड़हारा भी उसी की बात मानने लगा। इस कहानी को सुनकर हम खूब हंसते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मुझे यह लगने लगा कि यह कहानी मैंने इतनी बार सुनी है कि लकड़हारा मेरे अंदर समा गया है। मैं वो लकड़हारा बन गई। कहानी से निकलकर असली पात्र में तब्दील होता लकड़हारा, जिसके आसपास से भी साहस नाम की चिड़िया नहीं गुजरी। जो साहसी ही न हो, उसे दुस्साहस की आशा करना तो व्यर्थ है। मैंने अपने फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगी, बिल्कुल लकड़हारे की तरह। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ, मैं यानी एक जीती जागती लड़की, नए जमाने की लड़की ये कह रही है कि वह साहसी नहीं है और अपने फैसले नहीं ले सकती। ऐसा मुझे कैसे पता चला? ये तो बहुत आसान था। पहली बार तो तब जब ग्रेजुएशन पूरा होते ही माँ ने एक लड़के से मिलवाया। लड़का जब घर से चला गया तो माँ ने कहा, देख मना मत करना, बिना बाप की लड़की को तुम्हारी शादी करूं तो चिंता से मुक्त हो जाओ। लड़का खाता कमाता है, लड़की को जीवन में चाहिए क्या?
लकड़हारे ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, 2 वक्त के खाने और 2 जोड़ी कपड़े से ज्यादा जीवन में चाहिए भी क्या। अंदर बैठा लकड़हारा कुछ ही कहना चाहता था कि उससे पहले उसकी पत्नी चली आई दंदनाती, गुस्से में लाल। लकड़हारा से चुप कराए से पहले वो मां से बोल पड़ी, ऐसे कैसे नहीं चाहिए खाने और कपड़े से ज्यादा। न आंधी, न तूफान, न बारिश, सामान्य मौसम, साफ हवा ठहरी हुई, और वैसी ही मां की निगाहें, निगाहों में बस एक ही प्रश्न, तुम्हारी ये हिम्मत, ये जुर्रत। लेकिन लकड़हारे की पत्नी थी कि हार मानने को तैयार ही नहीं थी। अंदर बैठकर वो उकसाती और हर बार लकड़हारा रिश्ते के लिए मना कर देता। लकड़हारे की पत्नी जीती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लकड़हारा हार गया था। इसका मतलब था कि लकड़हारा कुछ देर के लिए शांत बैठ गया था। इस बार उसने पत्नी को जीत जाने दिया था। आखिरकार थक हारकर दूसरा खाता कमाता खोजा गया। लेकिन जब 5 सालों में अच्छे और खाते कमाते लड़के ने मां से तरह तरह की चीजें मांगी, तो मांग और आपूर्ति का नियम गड़बड़ा गया। वे लोग एक जीती जागती लड़की को सिर्फ इसलिए छोड़ गए क्योंकि उसके माथे पर बिका हुआ माल वापस नहीं होगा जैसा कुछ नहीं लिखा था। चिंता मुक्त 5 साल फिर से चिंतन में तब्दील हो गए। उन लोगों ने मेरे इतने ऐब गिना दिए कि कोई कुछ नहीं बोल पाया। माँ भी ये नहीं बोल पाई कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा न करें। मेरे ऐब के बारे में लोगों की अलग अलग राय थी, इसलिए मैं तय नहीं कर पाई कि चिंता के रूप में दोबारा घर आना ठीक था या वहीं से चिता के रास्ते ज्यादा ठीक था। घर वापसी का असर यह हुआ कि लकड़हारे ने स्थायी कब्जा कर लिया और उसकी पत्नी कहीं कोने में दफन हो गई। माँ ने भाग दौड़कर एक दफ्तर में बतौर डाटा एंट्री ऑपरेटर मेरी नौकरी लगवा दी। दफ्तर में विभाग के तीनों वरिष्ठ अपने हिस्से का काम छोड़कर चले जाते, लेकिन स्थायी रूप से गहरे बैठा हुआ लकड़हारा मुंह से आवाज भी नहीं निकालने देता। मैंने बताया ना कि मैं साहसी नहीं हूँ, और आप तो जानते ही हैं कि विरोध साहस से ही पैदा होता है। जाड़े के एक दिन जब लगभग 5000 पन्नों की एक एंट्री की जानी थी, काम खत्म हुए बिना दफ्तर का समय खत्म होते सब धीरे धीरे निकल गए। मैं कह भी नहीं पाई कि मैं अपने हिस्से का पूरा काम कर चुकी हूँ और मेरे जाने का भी समय पूरा हो गया है। मेरी उंगलियां जितनी रफ्तार से कीबोर्ड पर चल रही थी, उतनी ही तेजी से अंधेरा भी उतरता चला आ रहा था। धीरे धीरे दूसरे विभागों की लाइटें बंद हो गई और सन्नाटा कुर्सियों मेजों पर बैठने लगा। रोशनी के नाम पर मेरे क्यूबिकल की एक ट्यूबलाइट और कंप्यूटर की नीली रोशनी मात्र थी। आवाज के नाम पर कीबोर्ड की खटखट। धीरे धीरे बाहर गाड़ियों की आवाजें आनी भी कम हो गई। कीबोर्ड की खटखट के बीच सैंडल की खटखट ने ले ली। बहुत शोर के साथ दरवाजा खुला फिर बंद हो गया। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि पलटकर उस ओर देख पाती। दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर पहले तो ये आवाज नहीं थी, या फिर मैंने बेध्यानी से सुना नहीं। नल की आवाज तेज होती जा रही थी। हालांकि वॉशरूम थोड़ी दूरी पर था, लेकिन वहां जरूर कोई था। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली। रात के 9 बज रहे थे। कुछ देर मेरी उंगलियां ठहर गई। मैं दोबारा मुड़ी तो थोड़ी दूर बनी स्नेहा के क्यूबिकल का फोन बजने लगा। स्नेहा मेरे विभाग की हेड है। सन्नाटे में फोन की आवाज ने मेरी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। मैंने कंप्यूटर बंद कर घर जाने का फैसला किया। भले ही मेरी नौकरी 2 महीने पुरानी थी। मैं संभल कर कुर्सी पर बैठी और कंप्यूटर बंद करने के लिए उठी ही थी कि फिर से खटखट की आवाज आने लगी। अब वो आवाज मेरे करीब धीरे धीरे आती जा रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि पलट कर देख सकूं। खटखट ठीक पीछे मेरे बंद हुई और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं पूरी ताकत से चीख दी। मेरी चीख खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे डपटा। तब तक उस मंजिल का गार्ड भी अंदर आ चुका था। उसके कहने का आशय ये था कि मैं नीली बेवकूफ हूँ जो इतनी रात अकेले दफ्तर में बैठी हूँ। अकेला होने पर कुछ भी हो सकता है और इस तरह की कोई जवाबदारी दफ्तर की नहीं होती। इस तरह अकेला बैठना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। उसने कहा, मुझे बताना चाहिए था कि स्नेहा को कि इतना काम अकेले एक व्यक्ति एक दिन में नहीं कर सकता। वो मुझे अपने साथ उठाकर नीचे ले गई, अपनी स्कूटी पर बैठाया और फिर पूछा कि वो मुझे कहाँ तक छोड़ सकती है। उन्होंने जाते हुए लाइट जलती देखी थी, पर उन्हें लगा कि मेरे डिपार्टमेंट में और भी लोग होंगे। गार्ड से पता चला कि मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं अकेली नहीं निकली हूँ, तो उन्होंने स्नेहा मैम के एक्सटेंशन पर फोन लगाया और दोबारा मुझे देखने ऊपर आए।
अगले दिन सुबह मेरे बिना कुछ भी कहे वो खुद मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरी उंगलियां कुछ ज्यादा ही तेजी से कीबोर्ड को पीट रही थी, इतनी तेजी से कि उन्हें देखने के बाद भी थमने में कुछ वक्त लगता था। काम अब बहुत ज्यादा था और समय मेरे पास कम। उन्होंने स्नेहा मैम को मेरे क्यूबिकल में ही बुला लिया। उनकी बातचीत से लगा शायद वो उनसे अच्छे से परिचित है। वो कल रात के बारे में बोले जा रही थी। स्नेहा मैम सुन रही थी और आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। भीड़ इकट्ठा होकर पूछने लगी कि मुझे किसने कहा था कि इतनी रात अकेले रुकने को? कौन कहकर गया था कि मैं इतना काम आज ही करके जाऊं? भीड़ जानना चाहती थी कि मैं अकेले रुकने का विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हूँ। लकड़हारा इंतजार कर रहा था, जो 4 लोग कारण बता दें मैं वही मान लूंगी। लेकिन 4 लोग तो एकमत होने के बजाय एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे थे। तभी मैंने देखा सालों पहले दफन हुई लकड़हारे की पत्नी फिर से दृश्य में शामिल हो गई है। लेकिन इस बार वो मेरे अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बोल रही थी। उसकी पत्नी खटखट की आवाज करने वाले सैंडल पहनने वाली मैम के अंदर समा गई थी। लकड़हारे की पत्नी ने सबको डपटा और लकड़हारे का पक्ष लिया। उसने बीती रात की पूरी कहानी सुनाकर सबको चुप कर दिया। अब लकड़हारे की पत्नी जब देखो तब मेरे ऑफिस से निकलकर मेरे क्यूबिकल में आने लगी। हम दोनों के रास्ते एक थे, अलबत्ता मंजिलें अलग अलग थी। एक बिंदु ऐसा आता था जहां हम जुदा हो जाते थे। स्कूटी से ये रास्ता एक साथ पार होने लगा। एक दिन पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही उनसे कह दिया माँ बीमार है। फिर धीरे धीरे परेशानियों की गठरी खुलती गई और प्यार के एक रेशमी धागे ने अदृश्य रूप से हम दोनों को बांध लिया। 4 साल हो गए थे उनकी शादी को, पर उन्हें बच्चे नहीं थे। पति अच्छा था, कुछ कहता नहीं था, लेकिन उनका मन ही नहीं कहीं अपराधों से घिरा रहता था। एक दिन उन्होंने कहा चलो फतेहपुर सीकरी चलते हैं। आगरा से बस 40 किलोमीटर दूर है। वहां सलीम चिश्ती की दरगाह है, मन्नत मांग कर आते हैं। सुना वहां सबकी फरियाद सुनी जाती है। और एक दिन शाम मैंने खुद को शाम 4 बजे वाली ट्रेन में बैठे पाया। उन्होंने कहा शाम 6 बजे तक आगरा, 6:30 बजे तक सीकरी, 7 तक दरगाह का काम खत्म, 7:30 बहुत हुआ तो 8 तक दोबारा आगरा, फिर 8:30 वाली ट्रेन और रात को 11 बजे तक घर। उन्होंने जितना सरल ढंग से कहा मैंने उतना सरल ढंग से उसे मान लिया और मन्नत को मन ही मन दोहरा कर उनके साथ चल पड़ी। संदेह की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मंतो ने पहले ही को समझदार मान चुका था। लकड़हारा मूर्ख था, लेकिन वो तो उसकी पत्नी थी ना, और वो लकड़हारे की पत्नी की तरह समझदार थी। ट्रेन चलती और 6 भी बज गए। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता आई। फिर 7 बजे और 7:30 जब ट्रेन आगरा कैंट प्लेटफॉर्म पर रेंग रही थी, वो फुर्ती से उतर गई। मैंने डर कर आंखें बंद कर ली, पर ट्रेन धीमी थी और उनका संतुलन गजब। ट्रेन रुकने पर जब मैं उतरी तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। उनके सामने पहली बार लकड़हारे ने हिम्मत की। बहुत देर हो गई है, यहीं से वापस लौट चलते हैं मैम, वही 8 बजे वाली ट्रेन से। उन्होंने प्रतिवाद किया, कुछ इस तरह तुम्हारी तरह बेवकूफ और डरपोक नहीं हूँ। उन्होंने डीन हाँ की, पहले भी कई दफे आई हूँ मैं यहाँ, 15 मिनट में दरगाह पहुंच जाएंगे। तुम्हें सीकरी घुमाना था और फिर कभी अभी सीधा दरगाह चलेंगे और फिर वापस स्टेशन, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, समझी? डरा मत करो। गर्मियों का दिन ये आराम से धीरे धीरे अलसाते हुए छूटता है। उसे डर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आसपास के लोगों को लगभग थकियाते हुए वह रिक्शा पर सवार हो गई। गांव जाने वाले कुछ लोगों के अलावा वहां जाने वाली बस में हम 2 बाहरी थे। जब वहां पहुंचे तो सड़कते सड़कते भी शाम रात में तब्दील हो गई थी। बुलंद दरवाजा देख पाके मैं भूल गई कि वापस लौटना है। वो लपक कर दरगाह की ओर दौड़ पड़ गई। हमने खूब दिल से दुआ मांगी, मौली बांधी, और जब वहां से निकले तो रात खिल रही थी। बाहर आकर पता चला कि दिन भर पर्यटकों को लाने वाले गांव के बाशिंदे अपने घर में समा चुके हैं। लालटेने और पीले बल्ब टिमटिमाने लगे थे। बहुत दूर चलने वाला कोई भी साधन नहीं मिला जो आगरा पहुंचा सकता। वो लकड़हारा जैसे उनमें समा गया। एक अहमकाना फैसला। उन्होंने किसी से आगरा तक जाने की तरकीब पूछी और पैदल चल पड़ी। बहुत नजदीक कोई चौकी तक जहां से दूसरे गांवों से आती जीप आगरा छोड़ सकती थी। सन्नाटे ने रात के 9 को 12 में तब्दील कर दिया था। बोतल में पानी कब का खत्म हो चुका था। पैर जवाब देने थे, पर वो नजदीक की चौकी नहीं आई। उन्होंने घर पर कहा था कि वो टूर पर है और मैंने माँ को कहा था कि रात 11 तक तो जरूर आ जाऊंगी। 11 बजने में अभी 2 घंटे की देर थी, पर माँ को बताने के लिए साधन नहीं था। दूर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। फटफटी पर सवार 2 लोगों ने बताया कि हम गलत दिशा में हैं, अब यहाँ से बाएं घूम जाएं और फिर सीधे चलें, तब वो चौकी आएगी। पर अब आगरा पहुंचने के लिए शायद ही कोई साधन मिले। यह सुनकर भी मुझे गुस्सा नहीं आया। साहस पर गुस्सा कैसा? साहस की कीमत होती है, यह मालूम था।
पर दुस्साहस तो अनमोल है। अनमोल चीजें संघर्ष से मिलती हैं। आगरा अभी भी दूर था, अलबत्ता चौकी नजदीक थी। चिंता इंतजार को ज्यादा खींच देती है। घड़ी 2 बजाकर आगे बढ़ गई थी। हम वहीं खड़े थे। लग रहा था हम सदियों से वहीं खड़े हैं। जिस कच्ची सड़क से हम आए थे वहां हल्की हवा धूल से खेल रही थी। चौकी पर कोई नहीं था। एक मरियल बल्ब जल रहा था और लकड़ी का एक खोखीनुमा ढांचा खड़ा था। उसी को देखकर हमने मान लिया था कि जरूर यही चौकी है। मरियल बल्ब पूरी ताकत से जल रहा था, पर अंधेरा उस पर कहीं ज्यादा ताकत से हावी था। देखने पर लग रहा था कोई कच्ची सड़क है, शायद कुत्ते भी नहीं थे। सन्नाटा किसी तरह ढूंढने को तैयार नहीं था। मेरे मन ने कहा, पुरानी मन्नत तोड़ दो, नई मांगो कि सुरक्षित घर पहुंच जाओ। मेरे होंठ बुदबुदाना चाहते थे कि माँ का बीमार चेहरा सामने आ गया। वो भी न रही तो मैं कैसे रहूंगी, पर यदि सुरक्षित घर ही न पहुंच पाऊं तो माँ कैसे रहेंगी। अपनी मन्नत को लेकर मैं असमंजस में थी। जैसे मेरी मन की बात उनके मन ने सुन ली। उन्होंने बुदबुदाया, बच्चे के लिए फिर आऊंगी, अभी घर पहुंचा दे मौला। उनकी नजरें कच्ची सड़क पर टकटकी बांधे हुई थी, जैसे नजरों के समूह से जीप बुला लेंगी। किसी ने उन्हें बताया था कि इस रास्ते पर सिर्फ जीप चला करती है। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उन्होंने मुझे टोक दिया और कान चौकन्ने कर दिए। वाकई वाकई दूर से किसी गाड़ी की आवाज आ रही थी। आवाज धीरे धीरे नजदीक आई। 5 लोगों से लदी एक जीप एन हमारे सामने आकर रुक गई। हमने जो बताया, उन्होंने जो समझा, उसका सार बस इतना ही था, आगरा। जीप में बैठते ही मेरे जैसे दुनियादारी न समझने वाले को भी समझ में आ गया कि आसमान से गिरकर खजूर में अटक गए हैं। जीप में शराब की दुर्गंध भरी हुई थी। एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा और अश्लील ठहाका गूंजा। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। जीप ने रफ्तार पकड़ ली। हवा सरसराती सी हमारे बाल उड़ाने लगी। अंदर से आती आवाज ने कहा, रास्ता गलत है। तेज जीप चलती जीप में किसी ने गाने बजा दिए। कर्कश सा कोई अश्लील गीत बजने लगा। जीप में अंधेरा था, हम किसी को नहीं देख सकते थे। अचानक लगा जीप किसी कच्ची सड़क पर उतर गई है। कई जगह जीप हिचकोले खाने के लिए लगभग रुक सी जाती। वो ऐसे ही किसी मौके की ताक में थी। उन्होंने मुझे झटके से धक्का दिया और फिर कूद गई। मैंने उनका सिर्फ एक शब्द सुना, भागो। जीप से कुछ शोर हुआ और फिर वो लोग भी नीचे कूद गए। अंधेरा हमें ले गया, लेकिन हम अभी भी उतने ही पास थे जितनी जीप की घड़घड़ाहट सुन सकते थे। मेरा घुटना शायद छिल गया था। दौड़ना तो दूर, चलना मुहाल था, पर वो मुझे घसीटे जा रही थी। खाली मैदान में अंधेरा हो तो छुपा भी नहीं जा सकता। पीछे किसी ने टॉर्च जला दी। रोशनी हम तक नहीं पहुंची थी, पर हम कोई आकाश और पृथ्वी भी नहीं थे कि जो उन्हें हम तक पहुंचने में सैकड़ों प्रकाश वर्ष लगते। हम तेजी से पकड़े जाने के लिए दौड़ रहे थे, बचने के लिए नहीं। हम दोनों ही जानते थे पकड़े तो हम जरूर जाएंगे। इस बार मेरी बारी थी। बचा लो बाबा, घर पहुंचा दो, माँ के लिए फिर आऊंगी। मेरी रुलाई फूट गई। अचानक हमें लगा हम किसी से टकरा गए हैं। अंधेरे में अभ्यस्त आंखों ने किसी मनुष्य आकृति जैसा कुछ देखा। हम टकरा कर गिर गए। टॉर्च की रोशनी लगातार पास आती जा रही थी। उन्होंने नींद बेहोशी सी आवाज में कुछ शब्द बुदबुदाए, पीर बाबा मदद, आगरा मन्नत, लड़के बचाओ। आकृति ने हाथ दिखाया और हम बिना सोचे समझे उस दिशा में दौड़ गए। स्वभाव के विपरीत मैंने मुड़कर देखा। टार्च की रोशनी में सफेद लंबी दाढ़ी में एक चौकीदार खड़ा था। लकड़ी के बहुत से कटे टूटों के बीच हमने खुद को धकेल दिया। देर में सांस संयत हुई। हमने बहुत देर बाद एक साथ सिर उठाकर देखा। दूर दूर तक न कोई आवाज थी, न रोशनी। सुबह 5 बजे रोशनी के कतरे बिखरने लगे। हम वहां बैठे थे। एक बड़ा सा गड्ढा था। हमारी नजर सामने गई तो हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। वो श्मशान था, कच्चा सा घर। सड़क वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। एक चाय वाला अपनी टपरी के बाहर बुहार रहा था। हम धीरे धीरे वहां पहुंचे। चाय वाले ने अगली अजीब निगाह से हमें घूरा। उन्होंने बाबा के बारे में पूछा, शायद आभार कहना चाहती हूँ। चाय वाले ने बताया, वहां यहाँ कोई बाबा नहीं रहता। हम एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। हमने उससे आगे जाने के बारे में पूछा। उसने हमें तरीका बता दिया। एक ऊंची सी बस में हम सवार हो गए। इतने घंटों में पहली बार सुकून से पीठ टिकी हुई थी। माँ से क्या कहोगी, उन्होंने पूछा। आप क्या रह गई थी, मैंने कहा। चोट कैसे लगी पूछे तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम रात भर श्मशान में रहे, मैंने थोड़ा डर दिखाते हुए कहा। अच्छा हुआ ना हम वहां रहे। तुमने कभी किसी भूत को बलात्कार करते सुना है क्या? तो क्या वो बाबा भूत था? मैंने पिछली रात को याद किया। भूत तो सबके अंदर है, बस उससे साहस से लड़ने की जरूरत है। और क्या पता चिश्ती खुद चले आए हो मदद के लिए। मैंने पुकारा था, उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी आवाज उनके साथ मिलाई। उन्होंने बंद आंखों से ही मेरे हाथ पर हाथ रखा। इस स्पर्श में ममता भरा अपना स्नेह था, अभिभावक की तरह। उन्होंने कहा,
हर मन्नत का वक्त होता है, लगता है हमारी वाली का भी वक्त नहीं आया। मैं दोबारा आऊंगी, मैंने जोर से कहा, शायद दृढ़ता से। उन्होंने आंखें खोली और चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जैसे ही दोबारा कहा, अंदर बैठा लकड़हारा अट्टहास करने लगा। मैंने फिर दृढ़ता से कहा, हाँ दोबारा दोबारा आऊंगी। लकड़हारा फिर हंसता उससे पहले मैंने उसका हाथ पकड़ा और चलती बस से उसे बाहर निकाला। Thank you, Akansha ji. You presented your story in Dharavai Hindi. Thank you very much. Now, Mr. Benjamin is from Malala. Is a very famous writer of modern times. His book, The Goat Days. I have purchased it. I will go through it in next month only, but I have purchased it. And I am also eager to listen to him because he is a voice of present Malala literature. Actually, I am not at all comfortable with the podium and not believing that the story is for reading. Every reader's face and they do is something else. You must read in my front reading room or the bedroom. So, for the namesake, I will read some portion of the story, but whenever time over, let me know. I will stop there itself. And the story is originally written in Malayalam and translated by one of my friends, Lakshmi Vinachandran. And as we all know, this is the month of June is celebrating as a cure month, and I dedicate this story to the LGBT community. And the name of the story is Chocolate. A big, fat, expecting flew like spittle of a window and welcomed me at the police station. For a second, I stood stunned in the courtyard as if a blob of bedsheet had topped right in front of me without warning. Of course, there is nothing surprising about a sheer word in a police station, but hearing one in Uttan's voice shocked me. Uttan was questioning someone in a voice of trembling with the way. In truth, I was quite tickled by it. This is the same boy who would whimper, "No, Chetai, you shouldn't talk like that," even if I mutter a cuss word or two in a heat of anger. I stepped inside, imagining how I would tease him about this when I go to tackle him alone. "I am here to see the sub-inspector," I told Sandeep. If it is a complaint, talk to him. Sir is busy." He pointed to a junior officer. "No, I will wait." I sat down on a control in the railway station steel chair. Two teenagers with wild haircuts sat next to me, fuming in low and high voices, making one phone call after the other. One seemed to so disturbed that I expected him to pop the mobile screen to shards. Inside, the questioning was still in the full-on mode. Dirty words strung together in the long cinematic sentence would explode into our hearing from time to time. Even if no one else figured it out, I knew that Putin was completely a movie facing. Right after he got the degree, he went to Kochi for learn acting. 2 days into the 3 months course, he quit and rushed back, saying that his heart ached without seeing his Chetai. Some Hindi guy called Ranbir was his favorite then. He would trim my mustache and note how similar we were. I would ignore him out of sheer jealousy. It was on the unwrapping a parota parcel that I saw the art calling for policeman. Later, as we walked together in the dark alley, my hands over his shoulder and his body close to mine, I persuaded him to apply. "Who, me?"
I could see the surprise on his face very clearly, even in the dark. Chetai, do you even think can I do something like that? You apply anyway. Let me see. He kept putting it off each day. Finally, on the last day, it was I who dragged him to the internet cafe, poured over him of the form, filled it, and submitted the application. Putan showed the Muttil scoring 73% in the test. I do not see Putan emerge from the room that raked the filthy birds. Only a flash of his uniform as he crossed the lobby where we sat and entered the station officer's room on the other side. While my eyes had drifted to a message on my phone, Putan in uniform. An unnamed fear streaked across my mind as if a smoldering firebrand had touched it. Didn't he see me sitting here? Height 168 would go. Putin was 170. His chest was 83, only 80 needed. But he could not expand it by 5 centimeters. I will fail. He saw the face in my lap, so I took him morning and evening to the Panchayat ground to make him run, jump, and exercise. For him, the takeaways was the pleasure to his arm around me and nestling my neck on the bike rides, revealing the smell of my sweat. I do not for a moment take my eyes off the door. I wanted to see Putin come out from there. This time I ignored the messages that were jostling my phone, chirping like a caged birds. The weight stretched as a never-ending railway track, and I started counting in my head. How many seconds would it be? I had passed 763 when the elephant ear door flapped open. Somehow I felt that much had changed in the familiar face that I had gazed on. Cupped in my hands, my fist and licked my all over my heart's content. That old known face had been alluring and soft. On the new face lay pools of anger and hatred as the watercourse that had gone stagnant. He, he shouted, he shouted, Gussie glanced at the other end, others in the lobby and went to his room. I noticed the bat-like wakeboard beneath was the sub-inspector had sailed over his door. Secretly, couldn't hope to fail the physical. Then he fantasized he could go to the Davos Ishwarami and learn painting. Couldn't could paint beautifully, a born untaught artist. As I lay stretched out of the massive mango branches that leaned over the canal, he would trace curves on my body, roving his hands on my legs, back, neck, navel, chest, armpit, and loin. Sensuous drawing of naked men entwined with each other. Art was his fondest dream. A job, though, was that his family needed immediately. I stood up and approached the sentry. Hopefully, Putin was alone in his room. Now would be the best time. May I go in and see him? The young sentry hesitated a moment, then asked who he should say I am. Even though Chetai was in the tip of my tongue, I gave him my name. The policeman disappeared inside and returned momentarily and said, asked you to wait. My chest burned like two flames splashed with water. Disappointment. Maybe he did not recognize my name. Of course, that name was too common and Putin will not guess that I would travel so far and come here without calling. I should have simply said Chetai. How foolish. Weird here. Who sat in his seat next to me was called inside. Not once, not twice, but thrice. Thrice you showed off on your motorbike right in front of me without a bloody helmet. Thought I would not howl your ass in with that deadly bike. You are alive only because your parents pray hard. Leave the bike here for a week.
we will think about the matter afterwards. I was amazed at Putin's measured words. The boy begged to plead that apologized repeatedly, but Sub-Inspector Biru Bhaskar did not budge an inch. Like a lover who lost his paradise, the foreign youth crossed the threshold of station with his friend, and I stayed after them until they vanished in the distance. I felt bad for them. After all, they were just kids. Oh, the places we have seen, Putin and I on my bike with no helmet. How can I kiss your neck if we wear helmets that he would say. With the next day, SI Guru Faster played the policeman to him, asked for looking at me like you would suck mine if only you could. Shall I unzip for you? The woman in the opposite side gave me an embarrassed look. Acting deaf, I looked at the ceiling. Putin should not have said that, knowing full well that I was sitting there. The day before his physical, Putin lay across my breast and sobbed his heart out. I don't want to go. Out of 8, I don't believe I will make even 3. I skipped to work the next day and accompanied him just for boost the morale. They wouldn't let me in. I had to watch him from afar. He qualified the 100-meter dash but screwed up the 1500. Lost the high jump but made through the long jump. Cracked both short putting and critical throwing. Slipped when he was halfway in the climb rope. That was 4 out of 7. He felt confident. Putin, on the other hand, was completely exhausted. The last test was the toughest. 8 pull-ups that in the chin had to touch the bar each time. But the candidate lay flat on the footpath, apparently imitating an electrocuted crow. I rushed up to busy to the buy a glucose for him. While he was played out like that, I walked around a bit, a stroke of luck for me, Putin and his family. One of the policemen supervising the test was an old acquaintance. I dropped a few subtle hints about Biru Foster. Go on, win this. Go on and win this. This night will be ours alone for the wildest of our fantasies. I bent down and whispered the Putin's ear. I am sure this was the glucose that pepped him up that afternoon. Chatai, that policeman, language so dirty. Putin remarked that night he lay close to phoning me. I somehow managed 5 pull-ups. My arms felt like I have been walking around carrying mountains. I knew that you wouldn't let me do this if I fell. And that man keep on swearing, you son of bitch, pull your sorry ass up just 3 more times. And I managed one. You fucker, this is your golden life. For the sake of the other fucker, you drag you here, pull up. If you manage, howl yourself just one more time, you are the bloody sub-inspector. I somehow slumped to the ground after the 8th time and she said, can't call you name after this, will have to salute you. Chetai, will I have share if I wear the uniform? Yes, I said, kissing him, tasting the acid tin in his mouth. No, I will not. People can understand without the bad language. That is the kind of policeman I will be. He insisted, and I, in a moment, breathed in the face of my underbelly again. That was when we met for the last time. Then came the interview, training, posting the town 6 weeks ago. We got no chance to meet every day. I did not come because even today I did not come because it was convenient. It is the Putin's birthday today. We never missed each other's birthday. The first time Putin gifted me one of his drawing 2 little boys hanging down from a branch and smooching. Each year he gifted me more of his pictures. I felt a deep sadness when I ignored me now. This was not Putin, I know. He
used to long for our meeting. He would cry and whine and pick a fight, and each time we met, he would rush to me and strip off my shirt and cover me in kisses. Those 80 days when our bodies were aflame with the passion, they had ended. No more Bhutan and Chetai. We knew faster the sub-inspector and a far-flung acquaintance of his, they would remain. I rose to leave quickly, but suddenly the sentry asked me to go in. My heart had gone cold by then, and none of the light and warmth that had kept aside showed my eyes. I was convicted man caught by his hiding place. I realized soon enough that Bhutan too felt the same. He behaved as if I were the stranger on the other end of the village. How are you doing? As well. All well, you have gone grey. Fine, I said, my mind dry. So what bring you here? Nothing in particular. Another appointment. Just drop in like that. I lied. You don't want tea? Bhutan called out to the sentry. No, thank you. I just got one. These words poisoned in formality practically made me fretz. I involuntarily pulled back the hand that had reached out of my bag that had chocolate bar. The only birthday gift that Bhutan ever wanted was chocolate, and the taste from my mouth. Had he forgotten or was he pretending? So I had better leave them. I have been very busy. Could not visit, hard to send for Amma and sister. Do convey my regards to everyone. Sure, the walk to the station seemed endless. I felt the heaviness descend. Unwittingly, a drop of witness escaped. Witness escaped the corner of my eyes. Suddenly, a jeep pulled up, startling me. Bhutan, get in, I will drop off you. It's a near enough, I will walk. I said, get in. That was a clear touch of policeman in the voice. I obeyed him involuntarily. The jeep moved forwardly. Neither of us met each other's eyes. It was not on the bus station the jeep went, but the Bhutan surrendered house. They have all gone to attend the wedding, he said, stepping out of the jeep and opening the door. Somehow I hesitated, come in, I have ordered lunch. You must eat before leaving. Feeling like someone who had gained admission into a forbidden temple by giving a false name, I stepped in hesitatingly, haltingly, fearfully, and sat down on the sofa. Bhutan went inside and washed his face, took off his shirt, stored over his room, and changed out his pants, wrapping a lungi around his waist. He came and stood next to me. His eyes locked with mine for a few moments. I saw a policeman melt away from his face, and my old Bhutan emerging in blue. I stood up. Suddenly, he claved onto my chest and embraced me tightly, and then he murmured in my ear, "Where is my chocolate?" Thank you. Thank you very much. Overall session was good. Many were patiently listening. Some were patiently sleeping also. It was a good session. I feel the Hindi story of Madam and another story of Buniman. Both the stories were excellent in writing, but they were little bit longer. And the stories of Vita and Pawan Chavan, they were full with fragrance of their soil. But I request all the participants, I have also gone through this, for such a presentation, you must select the story compact and which will carry the message in minimum even time. But it was a good session. We came to
close to the atmosphere of Malayalam, being Hindi belt up to the Bangla and through Himachala. So I thank you very much, and I think hopefully we will meet in another such great and grand festival when our chairman Mr. Kambar and our secretary Rauji will call us. But today's show was good. अध्यक्ष महोदय जी, आपका और सभी कथाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके कथा वाचन के लिए। और इसी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के उस पड़ाव तक पहुंचे हैं जहां आपसे विदा लेंगे। अभी आपसे आग्रह करेंगे कि आप मेन हॉल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 6:30 बजे वहां पे दास्तान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आई होप यू ऑल विल एंजॉय एंड बाय बाय, टिल वी मीट अगेन, टेक केयर।